Hey, so let's look at what I mentioned yesterday. I had was bullish. I already mentioned that the RSI also looks to be bullish. It wasn't really bullish, but okay bullish. So did not really have a plan because I'm expecting this to break 230140 spot, 230 in future. So that did not happen today. Once that happens, I'll probably exit some of my 1700 calls, and the remaining ones I'll probably exit around if it comes above 300 in spot. Till then, no plans. So did not have any plan in the morning. Now, interesting part is, what did I do intraday? So yesterday, see pretty much the same pattern, and yesterday my stop loss got hit. Now, if I don't take that trade, then I'm in loss in that system, right? So took the trade again, and today, see, it gave me the profits. So basic rule: follow your systems, let it hit stop loss, and but when it gives you profit, take the profit. So that is what I was telling yesterday also. Stop loss hits are actually fine. Coming to Nifty, again a tricky one. Did not take this because I had a bullish bullish view on the markets right now. When I say bullish view, I'm just expecting a 17,400 300 levels pullback, and then I'll decide what to do. But for now, that is the reason I didn't really go bearish, even though this setup does indicate a bearish signal with stop loss high, and it actually gave you 20-30 points. But I was interested in trading this, and I got a very similar setup of yesterday. So traded this, and second half usually share a system trade. So second half trade was buy Nifty at 1245 at VWAP. So bought that, and for targets trail, and stop loss again was 12 o'clock low. So yep, so this was fun, and the morning was also fun, which I took in BankNifty. Anything else? Okay, so for tomorrow, I think I probably want, if this goes up, well and good, I'll exit some of my 1700 calls. If this doesn't go up, it comes back to today's probably near lows, or even, I don't really have a level, but if it comes back, then I will look for buying opportunities in Nifty. If it gap ups or crosses this high in Nifty, which is future 17,210, I will exit some of my 1700 calls, which I had taken when Nifty spot had crossed 17,000. Right now, Nifty spot is at what price is Nifty spot? 1700. So tomorrow, if this breaks, I'd probably get some more. And because I have 1700 calls, it's almost in the money right now. So no worries on that. But let's see. Thank you. तो पहले देखते पोस्ट मार्केट में क्या बोला था मैं तो बेसिकली बुलिश ही था. मैंने कल RSI का एक्सप्लेनेशन भी दिया था, एक पैटर्न उसमें. तो इसलिए बुलिश तो नहीं था मार्केट आज, और कल ये फेड भी है शाम को. तो बुलिश तो नहीं था मार्केट आज, पर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ थी जब मार्केट नीचे आ रहा था. तो एक वो था. दूसरा, अगर आप देखेंगे कल मेरा बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेम पैटर्न वाला ट्रेड आज बना, जिसमें सेलिंग वॉल्यूम्स आई थी, फिर सेलिंग वॉल्यूम कैंडल जिसने इनिशिएट किया था उसका हाई टूटा. तो ये बाइंग पैटर्न है. स्टॉप लॉस, ये कल स्टॉप लॉस हिट हो गया था, आज फिर से मैंने वो लिया. तो मैंने इसलिए बोला था कि स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं सिस्टम में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टम को बंद करके चले जाएं. आप ट्विक कर सकते हैं सिस्टम्स को, पर आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आपको कैप्चर करना चाहिए. अगर आप इसमें यहाँ पे कहीं पर निकल जाएं, तो फिर कल जितना आपने खोया उतना ही बनाया. तो एटलीस्ट अगर ये 1:1 है तो ये 1:2 होना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहने के लिए सिस्टम में. तो ये एक लॉजिक है जो मैं यूजुअली हमेशा फॉलो करता हूँ. तो सिंपल सेम स्ट्रक्चर आपके सामने है दोनों दिन. एक दिन स्टॉप लॉस हिट होता है, एक दिन आपको प्रॉफिट देता है.
तो निफ्टी में भी वो स्ट्रक्चर आया था जिसमें सेलिंग आई थी, क्योंकि बाइंग आई थी, फिर इसका लो टूटा, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं एक तो बुलिश था मार्केट में, मैंने बोला ही हर बार पोस्ट मार्केट में, तो इसलिए और बैंक निफ्टी में मैं ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था सुबह, तो मैं वेट कर रहा था निफ्टी में सिस्टम ट्रेड्स आए। निफ्टी में सिस्टम ट्रेड जो आए वो थे 1245 पैड वी वैप पे बाई करने के लिए, और वो मैंने अपने सोशल चैनल्स पे शेयर भी किया है, तो वो भी मैंने लिया और वो भी अच्छा खासा मिल गया मुझे उसमें। 12 o'clock स्टॉप लॉस था उसमें, शायद वी वैप पे बाई करना था 90 के आसपास, और स्टॉप लॉस था 6030 पॉइंट्स का, और ये गया ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, तो 1:3 किया ऑलमोस्ट उसने। और कल के लिए मैं क्या अगर ये गैप अप होता है तो मैं एक्चुअली जो कि निफ्टी का 17 का हाई था, एक बार वो टूट जाएगा तो मैं कुछ एग्जिट कर दूंगा 1700 कॉल्स, और अभी तक मैंने एग्जिट नहीं किया है। और अगर ये नीचे आता है निफ्टी कल, कितना तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन अगर ये नीचे आता है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ पक्का देखूंगा। पर एक ही पंगा है, कल शाम को फेड का वो है, फेड मीट है, तो उसके बेसिस पे भी काफ़ी कुछ हो सकता है, पर सेंटिमेंट तो मेरे हिसाब से अभी एटलीस्ट 17300 तो क्रॉस करना चाहिए स्पॉट को। देखते हैं। थैंक यू।